हेलो गाइस, गेमिंग एक्स में आपका स्वागत है और हॉगवर्ड लेगेसी के नए सेशन में भी। प्लीज चैनल जरूर चैनल का पेज जरूर चेक कीजिएगा और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार जरा रिकैप कर लेते हैं कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग। अच्छा, सेकेंड ट्रायल के बाद 1 2 3 मिशन हो गए हैं। इनसे बात करनी है, अमित से। यही है, ओके। मैं ये सोच रहा था कि थर्ड ट्रायल से पहले थोड़ा सा साइड मिशन कर लिया जाए ताकि कैरेक्टर का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो पहले एक मिशन कर लेते हैं ये, देन हम लोग साइड मिशन की ओर चलते हैं। कुछ यहाँ करना नहीं है। ओके, मिस्टर अमित कहाँ है? ऊपर है, इसी के ऊपर है शायद। इसके ऊपर पता नहीं कैसे जाना है। यहाँ पे ऊपर वो रखा है, क्रेट क्रेट चेस्ट जो भी कहा जाए। कितनी ऊपर है? ओके, देयर इज समथिंग। इधर से आवाज आ रही है, नहीं जाना। I've always said that. 6-7 फ्लोर पे तो हम लोग आगे होंगे। यहाँ से बाहर झांकने को मिलेगा नहीं। कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। Revelio. Lumos. Can't catch me. एक गेट है इधर, शायद कोई टेलीस्कोप रखा है। नहीं, गेट नहीं है। चलो ऊपर देखते हैं, ऊपर शायद मिल जाए। टेलीस्कोप तो ये रहा। आई डोंट थिंक ये वो वाला टेलीस्कोप है। यहाँ शायद, हाँ ये नहीं। ओफो, Hello there. Hello, Amit. ये भी Do I इंडियन लग recall रहा you है। saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. How do you know? How you never met? Have you ever met? You ये said you important know है। gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Lodgok is waiting. Should we चलो go? चले। Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. क्या यहाँ पे हम लोग नहीं यूज कर सकते ब्लूम? यानी कि फिर से इतना लंबा, एक मिनट, क्यों लंबा जाना? फास्ट ट्रैवल करो।
ये वाला है मेरे ख्याल से नियरेस्ट। थर्ड ट्रायल आई थिंक लास्ट ट्रायल होगा, जो You can't तीसरी imagine how प्रोफेसर थी, उनके नाम inconvenient नहीं याद travel आ was रहा। before I invented flu powder. तो वो ट्रायल तगड़ा होगा, आई मीन हैवी होगा। उसको पूरा करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। कौन है ये लोग? इनसे कौन लड़ेगा? यहाँ पे मकड़ियाँ हैं। पहुँच गए। हाँ, Revelio. Revelio. Expelliarmus. कुछ देखना पड़ेगा इसका। चलो पहले अपना मिशन शुरू करते हैं। A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrok with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrok. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. दो तो जानते हैं। That is where we began our search. Why does Ranrok care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, अच्छा, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. ठीक। Ranrok was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Okay. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, sir, Lord Gok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrok knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrok.
All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. अच्छा मतलब रैनरॉक के एंसेस्टर थे कोई, ठीक है, उन्होंने गॉब्लिन मेटल से कुछ चीजें बनाई विजार्ड काइंड के लिए जो मैजिकल थी। तो रैनरॉक मानता है कि उसकी मैजिकल पावर वो यूज कर सकता है। और मैं विजार्ड काइंड जो है वो अपने पास होना चाहती है, तो वही चीजें ये ढूंढ रहे हैं। The door is looking at us. अच्छा, okay. You'll see. तभी पहले नहीं खुला था। इस चीज का मुझे मतलब नहीं समझ आता। Books so rarely prepare one for reality. A real दूसरी goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I'm Revelio. a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still Revelio. can't believe we're inside a real goblin mine. Accio. ओके, इसने किया क्या? बस इतना सा किया। ओह शिट, क्या मैं फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ? नो, गलत फंसे। ये अंदर कब आया? मुझे जाके अपने गियर्स बेचने होंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाहर निकलने देना प्लीज, प्लीज 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 प्लीज। Revelio. यू मे लूज प्रोग्रेस। हाँ, अभी कोई प्रोग्रेस की नहीं है। Revelio. यहाँ आस पड़ोस कोई सेलर दिख रहा है? आई डोंट थिंक सो। वो रहा, दूर है शायद। यहाँ पे है। नहीं, सेलर कोई नहीं है। ये है सेलर। या तो फिर वहां जाते हैं, हॉग्समेट। बाहर तो मेरी जान के दुश्मन है। पेड़िए Revelio. पूरा। ये तो वही है, इनको पहचानता हूँ मैं। Why don't you have a little peruse? इसमें क्या है सर? ठीक, हैंडलिंग द कंपटीशन। न, कोई काम का नहीं है।
बिका नहीं। हाँ। Okay, there is a slight problem. पांच आइटम हैं, लो रूम तक हो जाते हैं फटाक से। Appreciate you stopping by. Be sure to visit. शायद कुछ अच्छे आइटम हो तो लगा लेंगे, आगे अंदर फाइट होगी, या बुरे होंगे तो बेच देंगे। किधर गई? ये तो है। एक प्लस का है, बाकी सब माइनस है। माइनस माइनस प्लस। ओके, देन अब मेरे को ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे क्लोजेस्ट में कुछ सेलर मिल जाए। छोड़ो, हॉक्समेट ही चल लेते हैं। आज ट्रैवल ही करना है तो कहीं भी कर लो। Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. मिस्टर पिपिंस, Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. बाय Hope बाय। to see you again. Farewell for now. नाउ हम लोगों का मिशन। ओके, फिर से ABCD पढ़नी पड़ेगी। ये मैंने नहीं सोचा था। ये तो गड़बड़ हो गया। चलो बातें स्किप कर देंगे, क्योंकि जान चुके हम लोग को क्या क्या करना है। ट्रैवल भी स्किप हो जाएगा क्योंकि फास्ट ट्रैवल अनलॉक हो चुका है, तो ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस यही दौड़ने में जितना लगेगा लगेगा। Hogwarts always nothing like a mystery. Concentrate on stealth. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in स्किप स्किप स्किप, लेट्स हेड। Lord... Revelio. Thank you for being willing to help. अरे Lord... कलेक्ट करने दो। हाँ। चलो फास्ट ट्रैवल करते हैं। I've always said that travel broadens the mind. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, Skip. presenting... Greetings, Lord Cock. Amit...
ओके लेट्स I गो। shall see you soon. फिर से बूम नहीं है। The door is looking at us. It's not a big deal. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. वाह, जादू से अंदर आ गया। एनपीसी का भी बढ़िया रहता है। I still can't believe we're inside a real goblin. Accio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Accio. तुम नहीं आओगे? Armand, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. आजा भाई। Accio. अब आजा। कि मेरे पास क्रूशियो है। Yes, of course. I've been at this for hours. Who's the inferior being now? Stupid. What's that shit? Very close. Expelliarmus. Descendo. What's that shit? Descendo. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Armand. You have my word. Revelio. Accio. Being watched by a door. Right. Don't wish to be seen doing. इससे क्या काम है? और ये गर्म गर्म पानी कैसा है? We won't get through as long as we can be seen by that eye. अरे मुझे बता पहले इससे क्या काम है? कुछ तो हो नहीं रहा है। गेट से तो निकल Should जाएंगे। use disillusionment. That eye won't see a thing. Still no difference. Revelio. Confringo. अब इससे क्या हुआ? Clever. Accio. अब शायद कुछ हो रहा है। I really don't know what it is, but इधर से इधर बह रहा है। I think अंदर जाकर चेक करना चाहिए। Revelio. I feel like a character from one of the है। adventure books I read during the summer holidays. हाँ दिखा।
ये रहा। Depulso. छोड़ना कुछ नहीं चाहिए तो अच्छा मिलेगा। अनआइडेंटिफाइड मिला है, वो भी लेजेंडरी आइटम है। Revelio. Let's take a look around, Armeet. See if we can find any plans. A schematic. There must be more notes around here. What could they be building? अच्छा ऊपर है, मुझे लगा यहीं पे है। Revelio. पहले ग्राउंड फ्लोर देख लेते हैं। If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. I'll be... छुप के मारे कि लड़ के मारे? मैं तो लड़ के मारूंगा। Quick enough. उसकी वो कहाँ गई? शिट। I won't rest. There you are. Confringo. तुम अभी जिंदा हो? अरे वो उसने मार दिया। Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. ऊपर माल है, यहाँ से जा सकते हैं? I don't think so. अंदर देख के आते हैं। Incendio. ये नहीं वर्क करेगा तो लोहे का है। Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for Revelio. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Empty-headed क्या empty-handed? क्या कुछ था? अच्छा, ओके। तो वहाँ पे भी शायद कुछ हो ऐसा, मैंने ध्यान ना दिया हो। एक और अनआइडेंटिफाइड आइटम। नीचे नहीं कूद सकते हैं हम।
Revelio. ना, चलो इतना हो गया। अब यहाँ पे और कुछ है? ये गेट खुलेगा इससे, बट अभी फंसा हुआ है, तो उसके लिए ये आग लगानी पड़ेगी, तब शायद काम मिल जाए। यस, कौन सा गेट खुला है? ये वाला खुला है। Revelio. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Lumos! गलत बटन दबा दिया। Revelio. Dittany leaves, ना? Lumos. Lumos! मून स्टोन मेरे पास शायद बहुत होंगे। शिट, गलत बटन दबा दिया। Rather unwise coming back this way. नीचे आओ। Expelliarmus. I'll bury you in the deepest box. बेचारा लड़का मार खा रहा है। ये तो गलत किया। Return me to the ground at once. Put me on the ground now! Get away! Expelliarmus. तुम वहां चढ़े हो? Rat this out longer than necessary. Get accustomed to that. Let's get this over. I won't rest. Confringo. Expelliarmus. Protego. How many of them are there? That should be the last of them, I'll meet. Revelio. ये वही गेट है। ये आग जल रही है ऊपर। यहाँ पे हम कुछ चेक कर लेना चाहिए। यहाँ अंडरग्राउंड भी कुछ है ना? कहाँ देखा था? ये रहा।
नहीं, इधर से हम लोग आए थे शायद। यस, इधर से तो हम लोग आए थे। तो अब यहाँ पे Revelio. कुछ नहीं है। Accio. नहीं काम किया। I'm quite good at sneaking about. You'll see. Still not working. आग चलाते हैं कहीं शायद। Yes. Confringo. Accio. कुछ हुआ? क्या हुआ? Revelio. यहाँ आग से इधर पावर जा रही है। अच्छा, लिफ्ट ओपन हुई है। This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. ड्रिल बना रहे हैं बड़ी सी खुदाई करने के लिए। ये लिफ्ट ऊपर लेके जाएगी। पीछे एक बैग दिख रहा है मेरे को। आ जाओ। हाँ। I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. लेवल 2। We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Can we please? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. दग गई उसकी। For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. ये क्या है? Ashwinder's egg. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrok must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research. And I know of the container.
The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrok's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrok was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. They rated me for trusting the witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrok murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrok, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrok never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrok learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrok knows. Watch for my hour. अच्छा मतलब जो मिरियम थी प्रोफेसर फिग की वाइफ, ये यही रिपोजिटरीज पे रिसर्च कर रही होंगी, ठीक। उसी रिसर्च में ये लोग अपना ये लॉजगॉक अपना पहुंचे वहां पे ये करने, रिपोजिटरी खोदने, सर्च I करने। hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. ठीक, तो वहां पे ये उनसे उनकी बात हुई, इन्होंने उसकी हेल्प ली या उसने हेल्प करी मिरियम ने। उसी चक्कर I में know a Merlin trial when I see one. मैंने स्वीट है मेरे पास। अच्छा, उसी चक्कर में इनको जो है रैनरॉक ने बहुत डांटा फटकारा, जो भी कह लो। Revelio. तब से इनका मन बदल गया और मिरियम को रैनरॉक ने मार दिया होगा। उम्मीद है, ऐसी मतलब कहा नहीं गया क्लियरली, बट उसी ने मारा होगा। Revelio. क्या नीचे लेके जाना है इसको? नीचे तो बहुत नीचे हो जाएगा। हो रहा Accio. धरती हिल रही है एक पत्थर की वजह से। Revelio. पहुंचा नीचे नहीं पहुंचा। This could prove dangerous if I'm not careful. Accio. These Merlin trials won't get the best of me. Revelio. किधर से हम आए थे?
जो कंप्लीट हो गया। यहाँ क्या है? Revelio. Accio. Revelio. मेरे को आस पड़ोस में एक तो और मर्लिन ट्रायल ढूंढने चाहिए। ये और ज्यादा पास पड़ेगा। Revelio. Oh, here's a pleasant surprise. नाव कहाँ है? ये कुछ हमें दिख रहा है, एक वो दिख रहा है, एक वो दिख रहा है, 3 होंगे। Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. एक और होना चाहिए, 4 होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या वापस आ गया क्या? Confringo. हाँ वापस निकल आया, मेरे को चौथा ढूंढना पड़ेगा। ये क्या है? Incendio. लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर किस चीज का? Revelio. कुछ हुआ नहीं, बस एक्सपी मिली। मेरे को 4th वो ढूंढना पड़ेगा। 1 2 3 इस साइड ही होना चाहिए, इतनी दूर होना भी नहीं चाहिए। Revelio. नीचे तो कुछ नहीं है। तुम यहीं खड़े हो? I really can't see the 4th one. Confringo. That's that. Settled. 3 ही थे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने वाले थे।
गियर का साइज नहीं बढ़ रहा है, आई मीन कैपेसिटी। जितना मुझे याद है मर्लिन ट्रायल से बढ़ना चाहिए था। कितने मर्लिन ट्रायल से बढ़ेगा ये भी नहीं मालूम। हाई भी मेरे पास है ना, कहीं है। Accio. Revelio. वापस आते हैं या नहीं आते हैं? Arresto momentum. Gladius. Arresto momentum. I'll look after you. वोल्स है, वोल्स। यहाँ पे क्या है? ओके, ये एरिया मैं क्लियर कर चुका हूँ, बार बार कौन लड़ेगा? निफलर, नीजल, बर्लिन ट्रायल जरा एक दो और करें, हमारा साइज उसका बढ़ जाए। गियर कैपेसिटी यहाँ पे क्या है? मकड़े हैं। इधर क्या है? और मकड़े हैं। आई डोंट वांट टू। एक मिनट, डैमेज था एंड एयरबॉर्न एम्बुशर। एम्बुशर यहाँ पे कौन दिख गया? एयरबॉर्न तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। दैट्स ग्रोथ। हाँ भाई, Expelliarmus. Incendio. ओके। Incend. Expelliarmus. Defender. जमीन के अंदर कुछ है नहीं, फिर भी जमीन कुछ जाते हैं लोग। Confringo. Incendio. There's a victory that came none too soon. Ugh. मुझे काम करना है पहले। सेटिंग में जाए, ग्राफिक्स ये है शायद, फुल स्क्रीन। ओके, मैं रेजोल्यूशन क्यों नहीं चेंज कर सकता? शायद इसकी वजह से। फिलहाल वो मुझे नहीं करना, मुझे इसको बंद करना है, इसको बंद करना है,
हाँ, सेव होता है नहीं होता है। और मेरे को टेम्परेचर चेक करना है। अब आया 80 FPS 79 एंड इंक्रीजिंग। एक्चुअली सीओडी में टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। Wonder who lives here. क्या हो गया? Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? What do you have for sale? What are we looking for today? This will do just fine. Thank you. Thank you for stopping in. I appreciate it. ये क्या गुस्सा हो गया? हाँ, ये 3 थोड़ी करने पड़ेंगे। कंप्लीटेड तो है नहीं, कंप्लीटेड होता तो सिंबल ना आता। Revelio. मुझे लगता है ये चेस्ट वगैरह हर बार आ जाती हैं। New instruments are expensive, you know. Fair enough. A pickle, an alligator. Revelio. Seems a pleasant enough little place. Is the knee reversal hex? Revelio. Revelio. All flavour of wicked to be had with a double. This place has seen better days.
Incendio. Perfect. I know you're the one who stole Where's that goblin helm, you little... Expulso! Well done. Child. Incendio! Someone's taken you. Cost us our friends. Incendio! Quite. You insolent Accio! Held your own for a while now, haven't you? Let's talk. Incendio! usual. You're strapped. You're down on dangerous ground, my friend. Keep your body bind curses to yourself. Expulso! Expulso! Incendio! Don't do it then, trying. Oh. A lamb to the slaughter. Petrificus totalis! Reducto! Petrificus totalis! Accio! Petrificus totalis! You must think so. That the best you can do? Oh. I'm just warming up. Afraid to face me? You're idiot. Did you hear that? Ow! कोई रिडक्टो मारो भाई. You won't not listen. दो ही बच्चे बाकी सब कहाँ गए? Stole I? Incendio! Expelliarmus! Confringo! आग नहीं लग रही? Revelio! क्वेश्चन ये है कि यहाँ से ऊपर कैसे जाया जाएगा? अच्छा ऊपर मकड़ियाँ हैं, वही में सोचो ऊपर है क्या? तो ऊपर है, एक इधर है. Incendio! ये तो मुझे अदम्य शक्ति दिख रही है. Revelio! Accio! वाव.
जहाँ पे काम ब्रूम से आसानी से हो जाएगा वहाँ इतने नाटक करने पड़ते हैं। टेम्परेचर 83 पहुँच गया है। That wasn't too hard. Potato! Eight legs is simply too many. Accio! Wingardium Leviosa. Leviosa! एक और अनआइडेंटिफाइड आइटम, फिर हम ब्रूम नहीं यूज करते। 84 बहुत अच्छा टेम्परेचर। फैन आई थिंक फुल चल रहा है। नीचे आओ। Abandoned long ago, no doubt. कभी ये होता कभी नहीं होता। Revelio. Revelio. बहुत सारे हैं। I should investigate. Confringo! Oh shit! Revelio. Sorry. और कहाँ है? इतनी दूर नहीं होंगे। Revelio. We lived here. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Confringo. Defendo. Incendio. Expelliarmus. Descendo. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Confringo. This looks intriguing. Revelio. मुझे और नहीं दिख रहे।
जितने थे उतने तो फोड़ दिया। पीछे क्या है? अच्छा तो दो ये है, पूरा हो गया शायद। Revelio. Capulso. Merlin अब himself पूरा would be होगा। proud. कहाँ कहाँ छुपा के रखे हैं? एटी सिक्स पहुंच गया टेम्परेचर। फ्रीक्वेंसी 1800 तक आ गई है गिर के। Revelio. A castle. Must have been quite stately in its time. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Leviosa. Incendio. Revelio. Accio. Revelio. Compulso. Revelio. All clear. अब गियर बढ़े 24 ही है। Between quests is good time to identify new gear. Sell access to vendors. Increase your gear recovery by 1. हाँ है तो मर्लिन ट्रायल से 3 कर लिए हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। एक दो और करते हैं, देखते कितने पे बढ़ते हैं। ये एक पड़ोस में ही दिखाई पड़ रहा है। ये वाला हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। पहले भी आ चुके हैं हम। कंप्लीट किए होते तो कंप्लीटेड दिखाता। Depulso. क्या ह्यूमन था? वुल्व्स हैं। ये जगह भी मैं जानता हूँ। What do you have in store for me? Accio.
Accio. Accio. Depulso. Descendo. Stupid. Descendo. Protego. Stupid. This is where you fail. और है That student defeated our encampment in the tower. Protego. Can't get you yet. Expelliarmus. Accio. Compulso. Descendo. Cruise. No. Accio. Incendio. नॉट इनफ मेजोसिड। अब आ गया। मुझे नहीं बुलाया। Defendo. Hello? One less human. Protego. Too late for you to learn the error of your ways. ओके, गियर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अभी हमारी 24 है। गियर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें मर्लिन ट्रायल कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक, मर्लिन ट्रायल कंप्लीट करने के लिए हमें मेलो स्वीट चाहिए। मेलो स्वीट खरीदने से अच्छा है हम उसको अपने खेतों में उगाएं। यू नो खेत। ओके, उसके लिए मेरे को सीड चाहिए होगा ना। सीड शायद था मेरे पास, तो सीड वाले काम इनके पास थे। इनके पास चलते हैं मैजिक नीप के पास, वहां से सीड्स मिलेंगे। सीड से हम पहले प्लांट उगाएंगे, प्लांट से हम Wants me to मर्लिन here I ट्रायल come. पूरे करेंगे। गियर लगा लेते हैं, शायद कोई अच्छा हो, वरना बेच देंगे। अनआइडेंटिफाइड जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा तब तक यूज भी नहीं कर सकते। ओके, लेजेंडरी है और हाई लेवल का है। Oh, it's you! What a pleasant surprise. ये क्या है? हाँ, को मेलो स्वीट मिल गया। Now, you let me know if there's anything else I can help you with. ये रे मेलो स्वीट लीव्स। इसका मुझे यूज नहीं समझ में आता, कब कहाँ कैसे करना है। No one can say I don't keep a stacked shelf. अब चलते हैं अपने रूम में। बोरी वन से 86। ये 29 पे खुलेगा, अभी हम शायद 28 पे हैं। 26 85। ऑफेंस के अपग्रेड मेरे ख्याल से मुझे अप्लाई ही करने पड़ेंगे। एक मिनट, ये क्या था? 29 पे लेजेंडरी, 28 पे लेजेंडरी, और वो 80 है या 85 है। ठीक है, भेज देंगे, मुझे क्या है, पैसे से मतलब है। पैसा बहुत हो गया है, खर्चा करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा।
10 मिनट लगाएगा। ओह शिट। क्या दबा दिया। अच्छी चीज ये है कि सिर्फ वन टाइम वो है, ऐसा नहीं कि बार बार तुम्हें सीट्स खरीदने पड़ेंगे जाके कि सीट खत्म हो गए। ओके, पोर्शन चेक करें हम पहले हमारे पास कौन कौन से कितने हैं। 2 हैं इंड्योरेंस, 3 फोकस, थंडर ब्रू बनाया जाए पहले। ओके, तो पोर्शन टेबल थंडर ब्रू, थंडर ब्रू, एक टेबल यहाँ पे और लगाई जाए। मीडियम, स्मॉल, टी शेप्ड, साइड पे 3 बर्नर्स। मीडियम में कितने हैं? 2 बर्नर्स। परचेज फ्रॉम टूम्स एंड स्क्रोल्स, खरीद लाते 3 बर्नर वाले, जगह कम खाएगा। ओके, टूम्स एंड स्क्रॉल चले, जितनी देर में मैन्युस्क्रिप्ट बनती है उतनी देर में टूम्स एंड स्क्रॉल रहते हैं। ये शायद, हाँ अब तो याद हो गया है। ओह 1200 FPS। Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. It's always nice to see a familiar face. A pleasure doing business with you. टी शेप यही है। Unlock the ability to conjure a potted table with 5 small pots. Use its pots to grow all sort of magical plants. 3 मीडियम पॉट। ये तो मेरे पास 2 वाली है शायद। टी शर्ट ये है। Nothing like ये finding खरीदते हैं। just the right thing, is there? खरीदने को सभी ले लें, काम तो आएंगी, बट कोई Let me know if मतलब there's नहीं है। anything else I can do to help. ऐसे रखो, शायद कभी काम आए। क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट चीज पहले आ जाए सामने। ये सब चीजें तो जब जरूरत होगी तब ले लेंगे। लार्ज वाले हम लगा सकते हैं। ये है टी शेप्ड। इनका मतलब नहीं समझ में आता है, थीम है क्या अलग अलग? ये टी शेप्ड है, लगे कहाँ पे? इसी चपका के लगा था। छोटी है इससे,
बस एक काफी है। सुबह खाना हो गया? अरे यार, आइकन किसी पे बन के आता है और वो किसी पे दिखा रहा है। देखो, इंट्रा डिस्प्ले आइकन उस पे आ रहा है, इंट्रा डिस्प्ले दिखा रहा है। $85। लोग उड़ते नहीं है, बस ऐसे बैठे रहते हैं। आप लोग को नहीं खाना? Accio. अच्छा, बुला सकते। गिर गया तो शिट। सही हो? हाथ पैर सलामत? सही है। गुस्सा आ गया भाई, गुस्सा आ गया भाई, गुस्सा आ गया। ओके, चेक करें। 10 मिनट हुआ है, 2 मिनट बाकी हैं। 2 मिनट और बर्बाद कर लेते हैं। इनसे मिल के आते हैं, इनके पास क्या है। लगा लेते हैं, फेदर तो है ही काफी। निफलर्स फर चाहिए। बाकी 20 भी पकड़ने पड़ेंगे, बट स्पेस कम है मेरे पास। पता नहीं अपने आप कब खुलेगी। Forty seconds। हाँ, इसी ऑर्डर में चलना है।
यहाँ से शुरू होगा। अच्छा, एक बार में 5 सीट बनेंगे। यील्ड जो है 5 का है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे जीपीयू फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। कहाँ 1900 से 18 के नीचे आ गई, 17 में चल रही है। अच्छा, अभी रेडी नहीं हुआ। जल्दी कर। शायद फर्टिलाइजर इसी काम का है, स्पीड बढ़ाने के लिए। अब देखिए कितने पोर्शन हो गए। 600 ब्रू हो गए हैं। इनविजिबिलिटी कम यूज करते हैं, हालांकि यूज कोई नहीं करते हैं, बट ड्यूस बना देते हैं। ये है ना ड्यूस। अच्छा, वो एग जो है वो इसी काम आएगा। अच्छा, अब यहाँ से चलें, एक दो और मर्लिन ट्रायल पूरे करते हैं। Not sure how I'd fare in a little place like this. ओके, अब मेरे पास जो है सफिशिएंट मेलो स्वीट हो गई है। फिर नहीं कर रहा। Revelio. कुछ हो रहे, कुछ हो नहीं रहे, ऐसा क्यों? Depulso. ऐसा नहीं, पहले हम कभी इनेबल कर चुके हों, इस वजह से ना हुआ। Not so tricky after all. यस यस यस, पहले हम इनेबल कर चुके थे, इस वजह से। तो जो बाकी नहीं हो रहे होंगे वो भी इनेबल्ड हैं, कंप्लीट नहीं किए होंगे। ओके, अब देखिए गियर कितने हो गए। स्टिल 24, 4 कर चुके हैं बट अभी भी 24 ही हैं, शायद 5 में होते हो। एक ये रहा। स्पीड बहुत कम है, अब तक मैं पहुंच जाना चाहिए था। मतलब एटलीस्ट बूस्ट की स्पीड तो अच्छी खासी होनी चाहिए थी, भले वो लगातार ना चले। Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Revelio. गड्ढा तो है, दैट मीन्स कहीं वो भी होगा। Depulso. अपने आप पहुंच जाना चाहिए था। These Merlin trials won't get the best of me. इजी था। 86 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जा रहा है,
उससे नीचे फ्रीक्वेंसी मतलब कम हो जाती है जैसे जाता है डिलेक्स। ये दिक्कत उसमें भी आ रही, सीओडी में भी। यूज मैंड्रेक। पानी के बाहर आए जो उसको लड़े भी, पानी के अंदर मेरा मामला स्लो जाता है। शिट, लेट हो गया। Expelliarmus. Oh, Thinking in जादूगर। terms of good and evil, nearly everything's जादूगर। unlimited in that. Thought we'd forget about that goblin helm you nicked. डिसाम बहुत आसानी से। You may want to move. अच्छा ढूंढने गया। I've seen billywings with more speed. Potato. Stop flitting around like a billywig. You're the little sod that saved Treadwell. Defender. आसानी से मार गया। Revelio. What are you? अच्छा बॉबकैट। Alohomora. इसको पकड़ लेंगे। रुक भाई रुक। Arresto momentum. प्लीज नहीं। शिट। Levioso. Arresto momentum. कितना भागेगा? अरे यार, इनको भी समय आना था। छोड़ूंगा नहीं। Arresto momentum. Levioso. आ गया। स्पेल साथ में लगाए हम पहले। No harm. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. एक वो दिख रहा है, एक वो दिख रहा है। Confringo. Confringo. Incendio. Defendo. Expelliarmus. Depulso. Descendo. Accio. Revelio. क्या करें काम? Arresto momentum. Gladius. Lumos. Arresto momentum. Levioso. Revelio.
कुछ तो होए। सारे तो स्पेल आजमा लिए। अंदर वो है खोलने के लिए मून स्टोन। Revelio. इससे पहले भी मैंने इसी वजह से छोड़ दिया था। इनका कुछ चमकना नहीं समझ में आ रहा है। तीसरा ये हो गया। बाद में देखेंगे, दूसरा ट्राई करते हैं। नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे कई हैं। Could it be a Merlin trial? यस। Revelio. ये वाले भी हो जाते हैं, बट इसमें पत्थर ढूंढने पड़ते हैं। वहां कुछ चमक रहा है। अच्छा यहाँ पे और हैं। नीचे पत्थर है ना सर। ये रहे। Accio. लेवियोसा ले लेना अपने आप। नहीं ले रहा है। विंगार्डियम लेवियोसा मेरे को लाना पड़ेगा। Wingardium Leviosa. Gladius. Wingardium Leviosa. Joanna Bickle can't keep track of her own child. Exactly. आई थिंक मेरे पास एक एक्स्ट्रा है। Wingardium Leviosa. अच्छा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है। Revelio. इनके वाले स्टोन पता नहीं कहाँ है। Revelio. कहीं तो स्टोन दिख रहे हो। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। Revelio. पिंकी स्टोन कहाँ है? वो रहे। Wingardium Leviosa. दो के हो गए, इनके स्टोन नहीं दिख रहे हैं। Revelio.
इससे ज्यादा नीचे क्या ही होंगे। कुछ चमकता हुआ नहीं दिख रहा। Revelio. बड़ी अजीब सी बात है, स्टोन नहीं मिल रहा। ये क्या है? व्हाट आर यू? काटता तो नहीं है? जीता रहता पेड़। Revelio. मुझे यहाँ पे स्टोन्स नहीं दिख रहे कहीं भी। वो रहे इतनी दूर ताओ। Wingardium Leviosa. एक उठ रहा बाकी नहीं उठ रहा। अब उठे। फाइनली पूरा हुआ। Merlin himself would be proud. मर्लिन तो प्राउड करेंगे बट हमारी तो ऐसी की तैसी हो रही है। अब चेक करेंगे यार। फिर भी अभी 24 है। 5 कर लिए, 24 का 24 ही है। पता नहीं कितने बड़े होंगे। एक और ट्राई करते हैं। It's like a place right out of a story. Oh my lord, what am I to... Aloha Mora. कि लॉक कुछ पुराना टाइप का लग रहा है। चमक धमक सी पुरानी लग रही है। What do we have here? Revelio. ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं है। क्या बात है, अंदर भी कुछ ऊपर कुछ नहीं है। लॉक किस बात से लगा रखा था? Am I missing something? Revelio. Nice to see you, my young friend. Leviosa. Gladius. Depulso. Revelio. Accio. Revelio. अंदर से कुछ नहीं दिखता, बाहर से ये देखो ये दिखा। 18 कॉइन के लिए एक इतने से घर में ताला लगा रखा है लेवल का।
No, I can't go back there. Is there something I can help you? Adley. Edgar Adley. And blast Milo and his mad scheme. Milo? All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a... Oh, poor Milo. He didn't... I'm very sorry to hear about you. Oh, thank you. I can't think of it. Milo's body is still in that... The absconder? In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket so that his daughter would have something to remember him by. Why would someone risk their life? As a potion ingredient, acromantula venom is incredibly valuable. In large part because it is, as poor Milo has proven, impossible to get. If I have... You can't possibly... Please, forget. Could you please remind me what... My friend Milo and I... It didn't go. I'm hoping someone... शॉप नहीं है? अच्छा, मुझे लगा शॉप है. Revelio. Alohomora. मुझे डेमी गाइस मून नहीं मिल रहे हैं. Revelio. सब कुछ तो बाहर रखा है, लॉक का मतलब क्या है? इतनी छोटी-छोटी सीढ़ियां हैं. कलेक्शन. Hard work and good luck, Gohan. Seems a pleasant enough little place. ये देखो. Legendary. Revelio. Didn't Clementine Willardsley ask you to follow those butterflies into the Forbidden Forest for her? Not the bravest. Alohomora. Revelio. इतना बड़ा चेस्ट, उसके अंदर जो है सिंपल ग्रीन आइटम है, वो भी लो लेवल का. I wouldn't mind a job at that out. हो गया पूरा साफ. Revelio. Revelio certainly never. What do we have here? A demiguise. कहाँ डेमी गाइस? What are you up to now? कहाँ इनको डेमी गाइस दिख गया? Revelio. मुझे तो नहीं दिख रहा. पांच मर्लिन ट्रायल करने के बाद भी एक लेवल भी नहीं बढ़ा. नेक्स्ट ढूंढते हैं. अच्छा, मर्लिन ट्रायल तो ही जा रहे थे. What do you have in store for me this time?
Revelio. Incendio. ये वही वाला है मूनस्टोन वाला, पता नहीं इसमें क्या होना है। लीव इट, जब फिगर आउट कर लेंगे तब समय लगाएंगे। Revelio. इसके ऊपर चढ़े, यहाँ गए। Not so tricky. ये तो बड़ा आसान था। छठा है ये, देखिए 6 में क्या मिलता है। अभी भी नहीं पड़ा। Revelio. एक, दो, तीन। Confringo. That's that. Settled. ये हो गया 7th। 10 तक करेंगे, तो फिर 10 में मिलता है कि नहीं मिलता। सेवन में भी नहीं मिला। Revelio. Oh, here's a pleasant surprise. अच्छा, इसमें बॉल फोड़ने वाला है। एक तो बॉल देखिए मैं, दो, उठे जाओ देखने जाओ। Revelio. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Revelio. बॉल ढूंढना बड़ा खराब काम है। अच्छा, मख्ती भी नहीं है। एक मिनट, आँख है ना इसके पास। ओके, अब पता चला।
खुल गया बट मिला क्या? 500 कॉइंस मिले हैं। वाह। Revelio. Accio. अरे अरे Revelio. क्या ढूंढ रहे थे, क्या करने लगे हम? चलो यार। हाथ होती है, ये सब चीजें बड़ी खराब लगती हैं। सब वो गायब हो गए, ब्रूम गायब हो गए। Revelio. एक रेंज होनी चाहिए मरीन रॉयल की। कहाँ ढूंढे हम बॉल को? कुछ ना चमक रहा है ना कुछ। Revelio. ये देखो, एक ये रही। हो जाएगा पूरा। Alan himself would be proud. इतनी दूर आओ। ये हो गई 8 नंबर का। लेकिन 8 पे कुछ हुआ? Still 24. Increase your gear capacity by completing Merlin trial challenges. आठ कर दिए, कितने करोगे? स्पीक विद नेटी, कोई मिशन ना हो, बात तो कर ले। कुत्ते के पिल्ले यहाँ पे। फिर ये वही वाला है। Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. ये गायब हो गया। Revelio. कॉमन सेंस अगर लगाए हम इसमें तो Expelliarmus. Confringo. अंदर तो जा रहा है, ऐसा नहीं है। छोड़ो, ये वाली बेकार है। नेक्स्ट ट्रायल पे चलते हैं। यहाँ पे 2 हैं, 2 ये कर लेते हैं। फिर अगर 10 पे नहीं होगा तो छोड़ देंगे अभी के लिए। I've always said that travel broadens the mind. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गलत क्या कर रहा हूँ। ये कौन से वाला है? कुछ दिख नहीं रहा तो। फिर वही वाला आ गया। नेक्स्ट चलते हैं।
Revelio. ओके, ये दिक्कत का विषय है। ये रहा। पत्थर कहाँ है? ये अगर यहाँ है तो ढाल इधर से आ रही है। शायद तो मुझे दिख भी रहा है। अच्छा, मुझे भी फिसलना है। नहीं, मुझे नहीं फिसलना है। हटाओ, पत्थर आ रहा सामने से। हट हट हट। बच गई। रफ्तार नहीं बढ़ रही है। These Merlin trials won't get the best of me. 9th हो गया। कुछ कलेक्ट तो करना नहीं था वाली ट्राई से, कैसे तो नहीं कलेक्ट ना कर रहे हो। ध्यान भी नहीं है, समय हो गया। Revelio. कहाँ गया मर्लिन ट्रायल? ये तो है। कुछ करना था नहीं, बस कंप्लीट ही करना था। उम्मीद हमें अभी भी नहीं है कुछ हुआ होगा। लास्ट एक और करते हैं, फिर अपना नेक्स्ट क्वेस्ट करेंगे। छोड़ो उसको। Off on another adventure, are we? Revelio. Okay, that sucks. This place has seen better days. I know what that means. Merlin trial. मुझे इनके ऊपर चढ़ना है क्या? आई थिंक गिरना अलाउड नहीं है। ओके, फंस गए। Oh shit! क्या बेहूदगी है? जंप तो माननी पड़ेगी। डिस्टेंस पे हो फिर भी ठीक है। मोड़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो यूटर्न लेने में वो बिल्कुल जैसे गाड़ी यूटर्न ले रहा, रुकने की जगह वो यूटर्न लेने लगता है। अब तो हो ही जाएगा। That's that. Settled. Okay, I am 29. 10 नंबर का हो गया, देखते क्या होता है।
हो जाना, बेइज्जती नहीं। नाउ अब मैं नहीं करने जा रहा। ओके, अपनी कोई क्वेस्ट देखते हैं बढ़िया सी। इनका असाइनमेंट क्या था? माउस कहाँ गया? और गायब हो गया। ये रहा। बोम्बार्डा एक्वायर अ डीरी कॉल। डीरी कॉल अभी तो हमें दिखा नहीं है। मीट सेबेस्टियन, ये सब करते हैं। ओ ओ ओ ओ, नया स्पेल है। शिट, हाउ कुड आई मिस इट। नया अनफॉरगिवेबल स्पेल है। कहाँ गया? कहाँ? इतनी दूर टहल रहा है तो। There's no telling what lies in wait for me in there. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned? I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this वही है catacomb. एंशिएंट मैजिक कह रहा हूँ, डार्क मैजिक से भरा पूरा होगा, जैसे कि क्रूशियो है, इंपीरियो। I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Shit. Protego! Stupid! Incendio! Confringo! Defender! Expelliarmus! Crucio! Incendio! At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. Accio! The rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Wingardium Leviosa! Leviosa! This room is taller than it looks. Finding a chest. Revelio. In a conspicuous loft. Brilliant. Incendio! Expelliarmus! Confringo! We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur.
Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Incendio. Incendio. Revelio. Incendio. We're in the tomb. I assume hearing sounds come with the territory. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. There's something here by the altar. इम्पीरियस कर्स का वो है, कुछ खास What did you नहीं है find? Revelio. Accio. बोन्स ही बोन्स है तो। और मुझे जितना याद है इन बोन्स से वो करना था। We've made it this far, but clearly we have more to do. Accio. Lumos. Accio. Caporso. Lumos. Accio. Lumos. मुझे याद नहीं आ रहा इन बोन्स का यूज कैसे करना था। Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. हाँ Leviosa.
Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Rickety bone bridge complete. Accio. Revelio. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But... Of course. Brilliant. There's more to this than I imagined. Look, bones stacked oddly on either side. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. You've done it. I felt it in my bones. Nice. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. How did you learn the Imperius Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Of course. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. You have a lot at stake. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. सीख लिया? Here we go. Something troubling it. Be on your guard. अच्छा, इम्पीरियो में ऐसा नहीं होगा कि वो आपकी पार्टी से लड़ाई करे, मतलब आपकी टीम में आ जाए। अच्छा, ये कर सकते हैं। Incendio. Repulsor. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Incendio. Imperio. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with... हाँ, बड़ी है तो इनको वो नहीं कर सकते। अच्छा, एक मिनट। नहीं, मुझे लगा था मेरी पार्टी से लड़ रही है।
अब देखे जरा, हाँ लड़ रहे हैं बिल्कुल लड़ रहे हैं। थोड़ा मारा मैं। Some of the stones have those two rune symbols. That has to be something. Confringo! Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Incendio. Revelio. Incendio. Accio. पोर्शन मेरे पास पूरे हैं, बनाए तो हैं इनको काफी समय से, जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी। कोई बड़ी फाइट होगी तो Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. सब लूट लिया ना? सब नहीं लूटा। Revelio. इधर जाने का भी रास्ता नहीं मालूम, इधर जाना ही जाना है, उधर से हम आए थे। चलो क्या हो गया? Nothing makes sense. बोन सैंग के पीछे गेट खोलना है। अच्छा पास जाना पड़ता है, वो तो क्या चाह रहा हूँ। Revelio. Accio. के पीछे है, पीछे कैसे जाऊँ? क्या ये टूटेगा? नहीं, यहाँ रास्ता बंद है। Accio. Depulso. Revelio. ये गेट खुलेंगे बट आई डोंट नो कैसे। Accio. Expelliarmus, Defender, Incendio, Confringo. Revelio. That's quite fascinating, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कैसे खुलेंगे ये। एक मिनट, ये बाहर आ गया ना? एक निकालो तो अंदर चला जाता है। और बाहर नहीं आएगा।
फिर अंदर चला गया। सिंबल्स बने इसके ऊपर। अच्छा तो इन दोनों के लिए मुझे ये और वो चाहिए। हाँ पहले, हाँ खुला एक। इसके लिए मुझे चाहिए ये और वो। इसके लिए मुझे चाहिए ये और वो। और कोई गेट बचा है? Head and shoulders above these bones. अच्छा ये गेट खुल गया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कैसे खुला, अंधी में खुल गया था। I see why Slytherin's student was so entranced with this place. लड़ाई नहीं होगी? होगी। Imperial. Potato. Crucible. That'd never end. Revelio. Dead end. Lovely. All No. that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Accio. Please do not remove this relic. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Accio. Okay, अच्छा पोशन है, मुझे लगा गेयर पूरे The हो गए। note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. वहाँ लिखा था leave the relic, don't remove it. तो रिमूव कर दें तो क्या होगा? जानना जरूरी है। I'm willing to ignore what the journal entry says. Wait. Agreed. This is meant to be. I'm taking it. Okay, Let's get to Feldcroft. सिस्टर का भी तो वो करना है। I must keep this relic secret. Revelio. Especially from my uncle. अच्छा, पोशन पूरे हैं, हेल्थ फुल है। Is that ominous? Okay, मैटर हो गया। Ominous. मैटर हो गया। Sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not.
If you won't put it back, then I will. Hold on, लड़ाई both होगी। of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. मनाना पड़ेगा इनको। How much did you hear? Sebastian's done his research. He knows what he's... Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. मुझे तो इसकी आंखें देख लगता है अंधा हो। Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperial? बिल्कुल। That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now... Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making it. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Wow. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperial on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. You've always अच्छा looked out for रास्ता each दिखा other, तो रहा है मैं Ominous फालतू and में I hope इधर he उधर knows भाग that रहा hasn't changed. Okay, what the hell just happened? How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Expelliarmus! Okay. Imperio! At your service. कर्स खत्म होने के बाद क्या? ला देख ही लें। अच्छा डर हो गया। That spell got my attention. All of Ranrock's loyalists deserve the Again same मैं fate. अपनी sword नहीं Nice वो work. broom नहीं यूज कर सकता। When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Imperio!
Who's there? Somebody there? Hello? खतरनाक है। Defendo. Incendio. What was that? Confringo. Expelliarmus. Dare you use that spell on me? Incendio. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldkopf's in trouble. They're under attack. Let's hurry. I've been fighting since. Imperial. Stay back! Keep out the way! Accio. Got it! मार एनिमी कहाँ है? हो रहा है कि Got them. Number 3. We'll make them reduce. I won't be. We're a minute dying, are we? This will not. बहुत सारे हैं। Incendio. It's almost too easy. Accio. Keep out the way. Fight. Cruci. I won't rest. Just you wait till I'm over. दो और है बाहर। एन ये बड़ी लग रही समझ दो। एक और आया मार ना दे। नहीं 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 नहीं। अच्छा इसने मार दिया। ओके यहाँ कुछ खतरनाक हो रहा है। अपनी करने वाला थी ना? अपने ही चाकू मार लिया। Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably. लो भाई गैस फुल होगा। 24 से 24 ही रहेगा। Revelio. अच्छा यहाँ पे शॉप भी तो है। पहले बेच लो फटाक से। बीच मिशन में नहीं कर सकते। चलो
What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrok's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. शॉपकीपर कहाँ है? लड़ाई में मारा गया? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. अंडरग्राउंड का ना नेक्स्ट. ये वाले मिशन करें, इससे हमको आवड़ा कडावड़ा ज्यादा मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा. आवड़ा कडावड़ा. ओके, ये मेन मिशन तो है नहीं. चलते हैं फिर अंडरग्राफ्ट. एक मिनट, पहले हॉक्समेट खोल लें, गियर्स खाली कर दें. Hogsmeade, here I come. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I hope to see you again. Farewell for now. चलते हैं अपने सीक्रेट रूम्स. ये बेचारा लेवल 25 से हम यूज कर रहे हैं और 29 पे आ गए, अभी भी बाकी चीजों से ज्यादा पावरफुल है. ये टॉपिक फेवरेट, इसको टॉगल करने का, हाँ ये रहा. बहुत कुछ है, ऑफ करने का नहीं है. इनविजिबल, यस. सबसे पहले चश्मा हटाओ, मुझे चश्मा कतई नहीं अच्छा लगता है. अब ठीक है ना, बाकी सब सही है. ओके, अब अच्छा था, स्मार्ट लगा लड़का.
जोकर बना रहता था। हाँ जोकर ठीक लग रहा है। ये दोनों टेबल हटा के यहाँ पे टी लगा देते हैं। हटाने वाला स्पेल ये नहीं है जहाँ तक। ये है कि ये है। ये है जहाँ तक। ये तो वो चेंज हो रहा है, मुझे रिमूव करना है। कोई इस वाले में नहीं है, वही वाला होगा। यस ये भी हटा देता है। Wingardium Leviosa. अच्छा अरे दिखाओ तो कम से कम। ठीक है यूज में नहीं है, समझते हैं। ये आएगा नहीं। ओके ये गड़बड़ हो गया। चलो छोड़ो, बाद में देखा जाएगा। काफी हो जाएंगे इससे लगता है। इतनी जल्दी बन जाएगा मैं सोचा भी नहीं था। मैं नहीं जाऊंगा दोबारा एक्सपेक्ट करने। अपना काम हो गया, चल रहे हैं वहां पे फील्डक्राफ्ट में, सॉरी अंडरक्राफ्ट में। ना मुझे नहीं मालूम अंडरक्राफ्ट का रास्ता कहाँ से था। यहीं चलते हैं, पता चल जाएगा। आई थिंक कॉमन रूम के बाहर था। ओहो तो खुलेआम आ गया। Off on another adventure, are we? यहाँ क्या कर रही है? पढ़ाई लिखाई नहीं होती इन लोगों के पास। हमारे पास तो दुनिया की जिम्मेदारी, हाँ ये रहा, दुनिया भर का बोझ है, दुनिया को बचाना है। ये क्या हो गया? दुनिया को बचाना है, इन लोगों के पास क्या है? Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your... Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Okay. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse.
I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anna We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I'll send you an hour when I have news. Revelio. इतना ये एनिमेशन थोड़ा सा खलता है कभी भले 4-5 सेकंड लगते हैं बट इरिटेटिंग हो जाते हैं। अच्छा इनके आउल का वेट करना पड़ेगा। अच्छा ट्रायल थर्ड शुरू हो गया है। हाँ थर्ड ट्रायल शुरू हो जाएगा। आई थिंक आई शुड होल्ड ऑन टू दिस। अगर बॉम्बार्डर सीख लें हम तो हमारा काम आसान हो जाएगा थोड़ा सा। इनमें से बहुत से एरिया में अभी हम गए नहीं हैं। क्वेस्ट था क्या? डिरिकॉल यहाँ भी तो बहुत जगह है। ये बहुत बड़ा मैप है। अच्छा तुम गए नहीं है। हो सकता यहीं पे मिले डिरिकॉल। चलो अभी बाद में देखेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेस्ट करते हैं। एटी वाली कहाँ मिलेंगी ये हमको? हॉक्समेड के पास। बाहर ही करना चाहिए था लैंड ताकि ब्रूम तो यूज कर सकते थे कम से कम। Does it get any more cozy than Hogsmeade? Are you ready to put an end to Harlow? बिल्कुल। I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble,
and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village. Where am I to find these? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade. And Otto Dibble, he works at Gladwax, so you will likely find him there. Very well. I knew I... We need to know how they are being blackmailed. Meet me here after you... Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Revelio. अच्छा यहाँ पे एक मिशन था, मैंने किया नहीं अभी तक। इधर से तो मैं 3 broomstick ऊपर जाना पड़ेगा। Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our... It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never... Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. Some evidence worth hanging on to. Thank you. Oh, I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other 2 friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow.
I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. So tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprised Brookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Otto Dibble works at Gladius. I should check there. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I have nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he didn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you know who came into the shop. I had the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention her employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never miss progress. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's from Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know as well. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective.
He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly and Rosie as well. Thank you for telling. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an orphan. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? I've spoken with Mr. Bickle's friend. How to find Natty. Work hard. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Slow down now. There we go. High wing! Go! चढ़ जा। Natty must be around here somewhere. अरे यार घूम के जाना पड़े क्या? यहाँ चढ़ गया वहाँ नहीं चढ़ पा रहे। वाह Only I could invent अंदर क्या करना है हमें? वाह Revelio. अम्मा ने नहीं पकड़ लिया। She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. बड़ा माल मिलता है इसके अंदर तो 500 सीधे। हाइड आउट है। वैसे भी वो बिना स्टिक के जादू तो कर ही सकती है। There must be another. Accio. Hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio. अम्मा ना मिल जाए उनकी नेटी की अम्मा जो प्रोफेसर Be sure I'm not seen. यहाँ पे वो है I mean पर्दा टाइप का। Revelio. Revelio. मेरे को लड़ने का मन कर रहा है। Find Natty optional find Gladius Wilbur's Otto's love letter. It's no Dallas. Better have a look then. What was that sound? What did you say, you coward? Will you hold still? You'll feel that अरे tomorrow. बैक टू बैक मार रहे हैं। मुझे कुछ करना है, करने नहीं दे रहे लोग। हाँ, ये कर लिया। अब
ये करना था। Back for more. Reducto! You would feel. Look what you've done. I'll rip your brain out your ears. Wanna look up? Defender. Novice love. Expulso. Die for that. Expulso. Expelliarmus. Expulso. What are your faults? A lucky shot! Expulso. Protego. Quite conductive, aren't we? Incendio. क्या करना है? Arresto momentum. Death from above. Imperio. This has become Slow and Ashwinder after they release the lightning speed. You will not हाँ ये दो lightning speed है slow ये रहा अच्छा ये है तो Arresto momentum. नहीं रोक नहीं किया साउथ को गया यही करना चाह रहा हूँ Levioso. This is not going well. भयंकर lightning से मार रहा है Expelliarmus. हट Now where did he go? Defender. अब ढूंढो जाके Revelio. यही लव लेटर है The book of poems that was taken from The Magnus book. Folded. He'll be thrilled to have this back. ठीक है Levioso. Revelio. Depulso. Revelio. Depulso. Revelio. फालतू में आए Revelio. मिल गया Also Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. He must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Over here. तो जा रिपोर्ट ले Revelio.
ये नेटी है तो ये कौन है? इसको अच्छा उनका जो वो Mr. था। Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea? It's nearby. Understood. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Mr. Rabe's wand could be in there. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. बड़े जादूगर हैं। Revelio. मुझे भी सिखाओ। Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. वो नहीं आ रही। आ रही है। अब यहाँ पे 170 FPS आ रहे हैं, कभी कभी 50 आने मुश्किल हो जाते हैं। आई थिंक ग्लिच वगैरह हैं गेम में, कुछ नहीं। Nutsai, ये तो horror है। I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. हम लोग अभी भी ऑक्समेट में ना? I could use some gold. Only a hairy-hearted sod has a knocked man. ये क्या था? पैसा नहीं, गरीब आदमी।
किसी भी शॉप के सिंबल क्यों नहीं बन के आ रहे हैं? यहाँ तो बन के आ रहे हैं। चलो यहीं चलते हैं। Just let me know if there's something in particular you're looking for. और ऊपर क्या है? Revelio. Nothing. Let's look at what we have, shall we? ए, शिट, बच गए। अच्छा, ये अच्छी चीज है। एक फीडर होना चाहिए, एक उसका भी तो होना चाहिए, जो ब्रश करने वाला। ये भी अच्छी चीज थी। और रैंडमली ये भी अच्छी चीज है। सब अच्छी चीज दिख रही है तो। ये मूनस्टोन की जरूरत नहीं, बहुत है मेरे पास। ये 1 2 3 45 57 5700 चाहिए। Nothing like finding just the right thing, is there? देखा, ये फायदा होता है ज्यादा पैसे होने का। Let me जब know if मैं there's जो anything खरीद else लूं I कुछ can भी। do to help. चलिए लगा तो दें इनको। अरे यार, कलेक्ट करने तो फिर फुल हो गया ना, सीधे बोलो फुल हो गया है। इंड्योरेंस 12 हो गए हैं, ये 12 हो गए हैं। अब इनविजिबिलिटी बात लाएंगे, पहले फोकस मोशन लगा देते हैं। बस ये रहा। ऑटोमेटिक वाला है ना यहाँ, चलो फिर नीचे लगाएंगे। गोल्डन अच्छा लग रहा है, छोटा सा है, वहीं फिट हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा है। ये ऑटोमेटिक वाली चीज अच्छी है, जो चीज ना हो क्या बना दो। एक मिनट मैंने खराब हो गया। और क्या अनलॉक हुआ है?
3 ही लगा सकते हैं। क्या डेकोरेशन है? रक्स क्या होता है? आर्ट वर्क, बोरिंग, बोरिंग, बोरिंग। तीन लगा सकते हैं, 3 लगा दो। अच्छा 3 हो गए, तो हर चीज हो गई। ये 3 हो गए, ये 3 हो गए और ये भी 3 हो गए। ओके, अपने आप बनता रहेगा कुछ ना कुछ। जैसे कि यहाँ पे क्या बन रहा है कुछ नहीं पता। ओके, लेट्स लीव द रूम। हमारा नेक्स्ट चैलेंज होगा ग्रीफ एंड वेंजेंस। नहीं, नेक्स्ट चैलेंज नहीं, ट्राई तो कहते नहीं कर सकते। नो, नेक्स्ट चैलेंज हमारा होगा ग्रीफ एंड वेंजेंस। ये पहले ये कर लेंगे। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। हाँ, नेक्स्ट सेशन।